Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the APS online teaching system. I am your biology teacher Sharjeel Ahmed Quraishi, as always here with the 11th lecture of our online biology class series. Today inshallah we shall finish the third chapter and move on to the next one in upcoming lectures. However, before proceeding to the lecture, I would like to make an important announcement. So beta, the portal assignments that you guys have been attempting are going to get really important as your yearly passing criteria depends upon them. Out of each assignment, one shall be randomly picked and marked, and those who are not sending them all together will subsequently be marked 0. So beta, do attempt and send the assignments to the relevant teachers. Anyways, let's get back to the academics, and without further ado, let's get started with our today's lecture. As always, we have the recap of our previous lecture where we looked at status of viruses in classification system, the binomial nomenclature with examples, and finally the conservation of biodiversity, which is going to be continued in today's lecture as well. So today we will look at the subtopics within conservation of biodiversity. The topics include impact of human beings on biodiversity, deforestation and overhunting, steps taken for conservation of biodiversity in Pakistan particularly, and finally some of the endangered species in Pakistan. So beta, the first topic of today's lecture is the impact of humans on biodiversity, which is mostly negative in all aspects, trust me. So historically speaking, about 10,000 years ago, there were only 5 million people on earth. But currently, this number has reached over 600 million. That's an increase of 120 times. So you can have a clear idea of how rapidly humans have populated the earth. Now, in order to improve and sustain lives of these 600 million people, a lot of work have been done that have totally destroyed the ecosystem for other living beings. In order to clear lands for our homes, we have cut down forests. Rapid industrialization has caused pollution, global warming, etc. Moreover, for just sports and joy of it, we have killed animals mercilessly and unnecessarily, causing extinction of a number of species within the last few decades. Out of these things which humans have done on environment, some are more prominent and more problematic. Let's discuss them in detail. So one of the most prominent causes of biodiversity destruction is the deforestation and overhunting. So these are two separate terms, but they are related to each other. So beta, what is deforestation? So deforestation is the process of deliberately cutting down the trees to clear land for human beings and industries. Okay? This so-called clearing of land could be done slowly, spanning over number of years, even decades, or could be much faster. Either way, it causes the loss of homes for all the animals that live in those forests. अब डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे होते हैं, जैसे कुत्ता या बिल्ली हो गया, इनके अलावा तो तकरीबन तमाम जानदार जंगल में ही रहते हैं ना। यहाँ तक कि परिंदे भी अपना घोंसला जो होते हैं वो ऐसी जगहों जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं, तो अब वहीं से ये अपनी खुराक भी हासिल करते हैं और वहीं से ये जो होती है अपनी रिहाइश का जरिया भी पैदा करते हैं। तो जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अब आप खुद सोचें कि जब फॉरेस्ट ही ख़त्म हो गया तो समझो उनका घर तबाह हो गया, तो that will destroy a particular ecosystem located in that particular proximity. ठीक है? Other than animal habitat, there are other ecological factors that have become prominent once a forest is cut down. First one being the imbalance in water level in soil and moisture level within the air, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। अब सॉइल इरोजन क्या है? ठीक है, यानी पानी का जब इम्बैलेंस आ जाएगा तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगी। अब हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होती है। ठीक है, बेटा जो दरख्तों की जड़ें होती है ना, दे एक्चुअली होल्ड द सॉइल टुगेदर। अब जब दरख्त ही नहीं रहेंगे तो सॉइल जो है ये कैसे अपनी जगह पे कायम रहेगी? सो दिस सॉइल बिकम्स लूज एंड वॉशेस अवे विद द वाटर, यानी ज़रा भी बारिश हुई तो सारी मिट्टी बह जाएगी। अब ये मिट्टी बह तो जाएगी पर साथ सारे न्यूट्रिएंट्स भी ले जाएगी और जो जो मिट्टी की अपर लेयर में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ज़मीन बंजर हो जाएगी। सेकेंडली, दिस वॉश्ड अवे सॉइल में चोक द रिवर्स, यानी ब्लॉकेज आ जाएगी इस मिट्टी की वजह से दरियाओं के पानी में। सो दरिया का पानी फिर कहाँ जाएगा? दैट वाटर विल कॉज फ्लडिंग टू नियर बाय एरियाज। ठीक है ना? मोर ओवर रिवर वाटर यूजली इज कलेक्टेड इन डैम्स। सो अब जब मिट्टी ही मिट्टी भरी होगी उस पानी में, तो दैट सॉइल विल एक्यूमुलेट इन द बॉटम ऑफ द डैम्स, thus decreasing their capacity. Moreover, as there will be no trees, there will be no transpiration.
अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है? So beta, the transpiration is the process of evaporation of water from leaves of the trees. So when there will be no transpiration, there will be no cloud formation, ultimately resulting in no rainfall. ठीक है ना? I hope you got the concept here. Okay. So now we move on to the next topic, or you can say the next part of this, the first topic, which is the overhunting. The overhunting can simply be defined as an unnecessary and excessive killing of animals for sports or fun, or to get products like tusks. टस्क कहते हैं जो हाथी के दांत होते हैं या सील के दांत होते हैं, उनको उनसे चीज़ें बनाई जाती हैं ना, सो टस्क और स्किन एक्सेट्रा. ठीक है. Overhunting has caused a number of species to go extinct from the world, and even within Pakistan we have lost a number of indigenous species. Indigenous species वो होती हैं जो कि एक ही एरिया में यानी सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती हैं. ठीक है ना. So we have lost a number of indigenous species due to overhunting. By the way, just for your knowledge, the first reported animal to go extinct was the dodo, which was reported in, I guess, in 17th century. यानी इससे पहले भी एक्सटिंक्ट होते रहे, बट रिपोर्टेड की मैं बात कर रहा हूँ, जो ह्यूमन हिस्ट्री में जो रिपोर्टेड एनिमल है, तो फर्स्ट वन वाज द डोडो विच गॉट एक्सटिंक्ट इन 17th सेंचुरी. इट वाज अ फ्लाइटलेस बर्ड. ठीक है ना. एंड अमंग सम ऑफ द एनिमल्स दैट हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन रिसेंट टाइम्स वी हैव द वाइट राइनोसेरॉस, जो अफ्रीका का नेटिव हुआ करता था. ये भी अब खत्म हो गया. नाउ वी have just one female species of left, so technically this is extinct because a single female cannot produce the offspring for the continuation of this particular species. ठीक है ना. So technically this white rhinoceros is extinct as well. Anyways, so beta, within Pakistan how would we be able to tackle these issues? I mean ये deforestation है और जो species जो है extinct हो रही हैं, how would we be able to tackle these issues, or how could we conserve our biodiversity? As I told you earlier, Pakistan has lost a huge portion of biodiversity in recent years. So in order to cope with these issues, following major steps were taken, which I will enlist here. So the first step taken is the mentioned in your book is the National Conservation Strategy, which was a strategy planned to conserve biodiversity within Pakistan. This strategy was planned between Pakistan and IUCN. Now, what does the IUCN stand for? International Union for the Conservation of नेचर. ठीक है ना. तो ये जो IUCN है, ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि ना बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री. ठीक है ना. तो पाकिस्तान ने IUCN के साथ ये स्ट्रेटजी प्लान की कि किस तरह हम अपने मुल्क में जो जानवर और जो इकोसिस्टम तबाह हो रहा है उसको हम लोग किस तरह बचा सकते हैं. ठीक है ना. तो ये एक स्टेप था जिसके ज़रिए बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की तरफ जो लिया गया है. ठीक है ना. Secondly, we had a treaty signed by our government in 1997 called UN Convention on combating डेजर्टिफिकेशन. अच्छा, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जब एक ज़मीन जो होती है उसका डेजर्ट, तो आपको पता है ना, डेजर्ट सहरा को कहते हैं ना. तो जब ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं उगेगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो दैट पर्टिकुलर लैंड वुड बी कंसिडर्ड अ डेजर्ट. ठीक है ना. डेजर्ट जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, जैसे सहरा होता है. ठीक है ना. सो डेजर्टिफिकेशन से बचाने के लिए और जंगलात की तबाही को और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि गुर्बत होती है तो लोग जो होते हैं ना वो जंगलों, ये जो ड्राई लैंड्स होते हैं कि इनको तबाह करना शुरू कर देते हैं लैंड्स को, फिर इनको ये कन्वर्ट हो जाते हैं डेजर्ट्स के अंदर. तो इन चीज़ों से बचने के लिए और बायो डाइवर्सिटी को और इस इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए ये जो है ट्रीटी साइन की गई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट और UN कन्वेंशन के CCD जिसको कहते हैं इसके दरमियान. ठीक है ना. नेक्स्ट अप वी हैव द हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट. अब आपको पता है हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस हैं वो पाकिस्तान में लाया करती हैं. दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1991 इन पलास वैली ऑफ KPK, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था. इट एम्स टू प्रोटेक्ट द एरिया एंड द बायोडाइवर्सिटी विद इन. ठीक है ना. फोर्थली WWFP. अच्छा, WWF बहुत आपने सुना, ये रेसलिंग वाला WWF नहीं है. ये WWF जो है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. ठीक है ना. ये इसकी स्टैंड करता है. आप गूगल करेंगे तो आपको ये पूरी एब्रीविएशन आ जाएगी. आपकी बुक में नहीं लिखी है बट मैं आपको बता देता हूँ. WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. तो WWFP का मतलब है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो पाकिस्तान में होता है. P का मतलब पाकिस्तान. ठीक है ना. तो WWFP started a project in 1992 to protect Chilgoza forests
इन द सुलेमान रेंज ऑफ बलूचिस्तान, दस प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी विद इन। ठीक है ना। अब जो चिलगोजे के दरख्त होते हैं वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, वो आमतौर पे इतने कॉमनली दुनिया में नहीं है पाए गए ना। तो उनको बचाने के लिए जो सुलेमान रेंज में, जिसमें बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है चिलगोजा का, उसको कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1992 में। ओके, देन वी हैड नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। As you already know, beta, the northern areas of Pakistan is home to a lot of forest and animal species. So this project puts a ban on hunting of these animal species living throughout the northern areas. ठीक है ना। तो वहाँ की उनको बचाने की एक effort है। For the next project, let's again go to KPK. So beta, the migratory birds from Russia reside in Chitral region of Pakistan during winters where they were excessively hunted. ठीक है। So again WWFP started a project called Conservation of Migratory Birds in Chitral KPK that puts a ban on hunting of those birds, thus conserving the biodiversity. Okay. Then we have another conservation project in Balochistan aiming to protect Chiltan Markhor in Hazarganji region. ठीक है। I happen to have visited that place multiple times. So what WWFP did is that they have made a park where hunting is prohibited, thus protecting the markhor from being hunted down. आप लोग भी उस जगह जाइएगा, and that place is known as Hazarganji National Reserve, या उसको चिल्तन पार्क भी कहा जाता है कॉमन वर्ड्स में ना। आप लोग देखिएगा वहाँ पे जो है ना वो पार्क बनाया गया बाउंड्री वाला। सो अ कॉमन पर्सन, अ हंटर और अ पर्सन कैन नॉट एंटर दैट द प्रेमिसेस ऑफ दैट एरिया, सो दस दे आर प्रोटेक्टिंग द मार्कोस फ्रॉम बीइंग हंटेड। ठीक है ना। Okay. Lastly, we have a ban on games where foreigners used to visit northern areas of Pakistan and use bears and other animals like the hunting dogs. ठीक है ना। तो उनको वो इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ तरह शिकार करने के लिए, या उनको टॉर्चर किया जाता था, या मुख्तलिफ तरह के उनसे काम करवाए जाते थे। ठीक है ना। सो दस WWFP imposed a ban on such practices. ये इलीगल प्रैक्टिसेस थी, उनके ऊपर WWFP ने बैन लगा दिया, एंड दस द बायोडाइवर्सिटी वाज कंजर्व्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। Okay, so beta, so the last topic for today's lecture is as well as this lecture as well as this whole chapter is discussing is the discussion about endangered species of Pakistan. Okay, beta, mind that these are the endangered species, not the extinct ones. So, beta, the first animal on our list is the Indus dolphin, which is also called Indus blind dolphin, क्योंकि इसकी आंखें नहीं होती। ठीक है ना। तो it is also known as, commonly known as Indus blind dolphin। ठीक है ना। This animal is found in the Indus River, and according to WWF, only 600 members of this species are left. By the way, the number 600 is mentioned in your books, but according to my research, this number is even lower। ठीक है ना। यानी 600 से भी कम रह गई हैं। तो this thing is about to go extinct in the near future if we do not अगर हम कुछ नहीं करते इसको बचाने के लिए। ठीक है ना। Okay. Secondly, we have the Marco Polo sheep, which is commonly found in the Khunjerab National Park and nearby areas. अच्छा, अब जहाँ पे ये वर्ड नेशनल पार्क आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि उस जगह को सिक्योर कर दिया गया है। ठीक है। नेशनल पार्क का मतलब ये होता है कि उस जगह, जैसे हज़ारगंजी नेशनल पार्क या खुंजराब नेशनल पार्क, तो वो एक कंसोलिडेटेड स्पेस बना दी गई है जहाँ पे उस जानवर का शिकार करना मना है। ठीक है ना। सो मार्को पोलो शीप इज़ फाउंड इन खुंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाई एरियाज. Their number is rapidly decreasing and thus efforts are underway for their conservation. लास्टली वी हैव द हुबारा बस्टार्ड। ठीक है ना। इसका इंग्लिश नाम हुबारा बस्टार्ड है, बट कॉमनली हम इसको जानते हैं तिलोर के नाम से। ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ तो सब बच्चों को ही पता होगी कि जो तिलोर का शिकार पाकिस्तान में बड़े शौक से किया जाता है। इवन बाहर से लोग आते हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरब से, जो यहाँ पे तिलोर का शिकार करते हैं। ठीक है ना। और इसको इतनी बुरी तरह, इतना ज़्यादा इसका शिकार किया जाता है कि ये जो है ना इंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंड बाय द वे, दिस इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड दैट कम्स फ्रॉम रशिया। ठीक है ना। सो the people in Pakistan as well as the foreigners visiting the Pakistan, they actually hunt them excessively. सही है। So that is why this bird is due to this excessive killing or this excessive hunting of this bird, this Hubara bustard or this Tilor is declared endangered in Pakistan, and the efforts are underway to conserve the biodiversity and conserve the species, this species, and protect it from the overhunting. Sorry. Anyways, beta, that's all for today's lecture and the third chapter as whole. I hope you understood all the concepts. Okay. Here you go with the assignment. I will emphasize again to attempt them and send to the relevant teacher before deadline, because these assignments are going to be marked for the passing criteria of this class. ठीक है ना.
Anyways, that's the terms to ponder section. Do have a look at them as well. Thank you so much, beta, and I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.